Hello students, again welcome to maths class. Today we are going to start our exercise 7.4. Before starting the exercise, let us understand some useful properties which will be used in this exercise. If two sides of a triangle are unequal, meaning the sides of triangle are not equal, meaning one side is greater than the other, then angle opposite to, here in this figure you can see that AC is greater than AB, and it is said that then the angle opposite to longer side is larger या greater. Now you can see AC is the greater side. AB and AC में जो AC है that is the greater side. तब now AC के opposite meaning AC, तो AC के opposite which angle is there? That is angle B. And which angle is opposite to AB? That is angle C. So this property says that angle opposite to greater side is greater and angle opposite to smaller side is smaller. So what does this gives you? This gives you in triangle ABC, angle B is greater than angle C, or you can say angle C is smaller than angle B. ऐसा कब होगा? When the two sides of a triangle are unequal. Our topic name is inequalities in triangles. तो इट मीन्स नाउ द साइड्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज हमें पता है साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. बट व्हेन द साइड्स आर अनइक्वल तब एंगल्स में क्या रिलेशन होगा? Then angle opposite to greater side will be greater and angle opposite to smaller side will be smaller. And next property is, in any triangle the side opposite to the larger angle is longer. Now this property is converse of the above property. Now angle के बारे में बताया है and you have to state about the side. Suppose in triangle ABC आपको गिवन है एंगल B ग्रेटर देन एंगल C. इट इज गिवन हेयर ऑल्सो. तब क्या होगा? देन विच साइड इज, एंगल B ग्रेटर है तो एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? B को छोड़ दो, AC. AC इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट टू C इज AB. देन AC इज ग्रेटर देन AB. Now third property is the sum of two sides of a triangle is greater than the third side. You already know this property. This property is already used in previous classes by you. The sum of any two sides of a triangle. Suppose a triangle is given to you and triangle is ABC. Then if triangle ABC is a triangle, then तो क्या होगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स मीनिंग ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी. सिमिलरली ए सी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी, और यू कैन से ए सी प्लस ए बी विल बी ग्रेटर देन बी सी. सम ऑफ इफ थ्री साइड्स आर गिवन एंड 7th क्लास में क्वेश्चन होता था, आपको पूछा जाता था चेक वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट. तब वहाँ पर हम टू साइड्स को प्लस करते थे एंड थर्ड से कंपेयर करते थे और इन तीनों ही कॉम्बिनेशंस को आप फॉलो करते थे. तो टू बी अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सपोज यू आर हैविंग साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एंड नाउ यू हैव टू ऐड any two sides. Suppose 5 plus 6 it is 11 and 11 is greater than 3. Now I am adding 6 plus 3 is equal to 9 and 9 is greater than 5. Now we have to add 5 plus 3, this is 8 and 8 is greater than 6. Meaning ये तीनों ही conditions हमारी satisfy होनी चाहिए, only then the construction of triangle is possible.
Students, we have to use these properties in our exercise 7.4. Let us start question number 1 of exercise 7.4. Show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. We already know this. कि एक right angle triangle में जो hypotenuse है that is the longest side. But we have to prove it here. So what is given here? In triangle ABC, angle B is of 90 degree. This is given. एंड आपको प्रूव करना है कि AC इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड. Longest side. So what for this what we have to do? In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. But among these angles, angle B is of 90 degree. So this gives angle A plus angle C is equal to 180 minus 90. And you get angle A plus angle C is equal to 90. And अकेला जो B है that is of 90 degree. So this gives you that angle B is greater than angle A. And angle B is also greater than angle C. मीनिंग जो ये राइट एंगल है ये आपके एंगल ए से भी ग्रेटर है एंड एंगल सी से भी ग्रेटर है. तो जब एंगल बी ए से ग्रेटर है देन व्हाट डू यू गेट? व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल बी? दैट इज ए सी. एंड विच साइड इज देयर अपोजिट टू एंगल ए? दैट इज बी सी. एंड फ्रॉम दिस वी गेट हेयर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी. नाउ विच साइड इज opposite to B, that is AC, is greater than next side is AB. Side opposite to angle C is AB. So from these two inequalities we get AC is the longest side in triangle ABC and AC or hypotenuse is the longest side in a right angle triangle. Next question. In figure, side AB and AC of a triangle are extended to points P and Q. Let us draw the figure. Side AB is extended A, B, and this is C. And side AC is also extended. This is extended to point P and this is extended to point Q. Now it is given that angle PBC meaning this one angle less than, ये less है QCB से, this one angle से. Now I am naming these angles as angle 1 and angle 2. Given in triangle ABC, angle 1 less than angle 2. To prove, what we have to prove? We have to prove that AC is greater than AB. अब AC को AB से ग्रेटर प्रूव करना है. मीनिंग अगर मैं ये एंगल को हम नेम दे रहे हैं 3 और इसको हमने नेम दे दिया 4. मीनिंग अगर हम एंगल 3 को एंगल 4 से ग्रेटर प्रूव कर दें तो AC जो है दैट विल बी द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल एंड AB विल बी द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू? प्रूफ. इन फिगर angle 1 plus angle 3 is of 180 degree and angle 2 plus angle 4 is also of 180 degree by linear pair axiom.
एंगल 1 एंड 3 का सम भी 180 है एंड एंगल 2 एंड 4 का सम भी 180 है. तो इट मीन्स वी कैन राइट एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4. नाउ बट एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1 इज गिवन. तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए जब एंगल 2 1 से ग्रेटर है तो इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट साइड में एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4. देयरफॉर एंगल 3 जो है वो 4 से क्या होगा ग्रेटर, बिकॉज सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज सेम एंड राइट हैंड साइड पर 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 है. तो सम को इक्वल रखने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जो आपका 3 एंगल है उसको 4 से क्या होना होगा ग्रेटर. एंड इन फिगर एंगल 3 इज अपोजिट टू साइड AC and this gives you AC is greater than AB. And what is the reason? Side opposite to greater angle. Hence proved. Next, let us start question number 3. Again the figure for question number 3 is given. First of all we have to draw the figure. Now in figure it is given that angle B is smaller than angle A and angle C is smaller than angle D. It means we have to use the property for the angles. Here we can write in triangle AOB. It is given that angle B less than angle A. This is given. So on basis of this we can write side opposite to angle B is AO is less than BO. Similarly, in triangle COD, angle C less than angle D आपको given है. So you can write which side is opposite to angle C, that is side opposite to angle C is OD is less than and side opposite to angle D is OC. So we are having two inequalities and we can add these two inequalities, adding 1 and 2 we get. जब इस टाइप से ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट में ऐड करना है एंड जो इनके बीच में साइन है इट मस्ट बी सेम. ग्रेटर है तो ग्रेटर होना चाहिए, लेस है तो लेस होना चाहिए, इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए. AO plus OD will be less than BO plus OC. Now from figure you can see AO plus OD becomes AD and BO plus OC becomes BC. So we get AD less than BC. Hence proved. Question number 4 now. AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Figure is given and you have to show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Let us draw the figure first of all. In question 4, in quadrilateral ABCD, it is given that AB is smallest side and CD is longest side of the quadrilateral. And we have to prove that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. To start this question, we have to do a construction here because there is no triangle and we need triangles to start it. Construction. Join A to C. We have to join any of the diagonal of the given quadrilateral. AC को भी join कर सकते हो और BD को भी आप join कर सकते हैं. And I am naming this angle as 1 and this one as 2. Now proof.
In triangle ABC, AB is the smallest side. ये आपको क्या है, गिवन है. तो देयरफॉर एंगल 1 जो है दैट इज स्मॉलर देन एंगल 2. सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, CD is the longest side. This is also given. Now we can name this angle as 3 and this angle as 4. Now which angle is there opposite to CD in triangle ACD में? CD के opposite जो angle है that is angle 3. तो therefore angle 3 is greater than angle 4. You have to give the reason also. Angle opposite to smallest side. Similarly, angle opposite to greatest side. Greatest का meaning है among all the sides it is having maximum length. Now again we are having two inequalities, but in these two inequalities signs are different. Here sign is of less than and this sign is of greater than. So we have to change it. We can write it as angle 4 less than angle 3. Now we have to add these two inequalities. Therefore angle 1 plus angle 4 is less than angle 2 plus angle 3. And from the figure, here AB is the smallest side and angle opposite to AB is 2. So this is 2. Angle 2 is less than angle 1. And now we get angle 2 plus 4 is less than angle 1 plus 3. And in figure you can see that angle 2 plus 4 is angle C and angle 1 plus 3 is angle 1. So and we have, or we can write it as angle A greater than angle C. So one part is proved. Similarly, by joining the diagonal BD, we get angle B greater than angle D. Hence proved. Let us start question number 5. In figure PR greater than PQ. PR greater than PQ is given and PS bisects angle QPR, meaning angle 1 and angle 2 are equal. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. Let us name these angles as angle 3, 4 and this one as angle 5 and this angle as 6 because we need all these angles to prove the question. Here PR is greater than PQ, so therefore angle opposite to PR is angle 6. Angle 6 greater than angle 5. This is angle opposite to greater side. Also, PS is bisector of angle P. So therefore, in figure, angle 1 is equal to angle 2. Now, by exterior angle property, in triangle PSR and PSQ, on both of the triangles we have to apply exterior angle property. And what is the exterior angle property of triangles? We know that exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angles. So we have
angle 4 is equal to angle 2 plus 5 and angle 3 is equal to angle 1 plus angle 6. बट जो एंगल 1 है वो आपको 2 के क्या गिवन है, इक्वल. सो वी कैन राइट इट एज angle 3 is equal to angle 2 plus 5. So it means now we are having these two equations and you can see angle 4 का जो सम है वो 2 plus 5 के इक्वल है and angle 3 जो है that is equal to angle 2 plus angle, sorry this is 6, but angle 6 ग्रेटर देन एंगल 5 जो है वो ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन. तो इट मीन्स एंगल 6 एंगल 5 से ग्रेटर है बट ये दीज टू क्वांटिटीज इक्वल हैं. तो इट मीन्स एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से क्या हुआ, ग्रेटर. दिस गिव्स एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 3? Therefore, angle PSR is greater than angle PSQ. Hence, proved.